record now. What I was telling you was, see, this is the lone pair of electrons, okay, and these two are the bond pairs. So while if while calculating the shape of the molecule, we ignore the lone pair. We ignore the lone pair as if it is not present. So you have to see only this two. So this looks like angular, na? It's like angle bana raha hai. So this angular shape is also called what? Bent shape, or it is also called V shape. Remember this again. Wherever you see the word angular, you can write bent as well as V shape. Got it? So the shape of SO2. So we'll write shape of SO2 over here. Okay. The shape of SO2. यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगा. This will be linear. 1 minute. This will be linear. Just ignore the lone pairs, if any, while calculating the shape. So this will be either you can write angular, bent, or V shape. Okay. Now the next part is after SO2. After SO2. Okay. 202122. 22 वाला example. 22 वाला example is water. So water में, I think water we have already drawn on the board. Can you see them? See that molecule on the LHS. So it has two lone pairs. It has two lone pairs and two bond pairs. So as I had shown you in my previous session also, we'll remove these two atoms and we'll put two lone pair of electrons. Okay, we'll put two lone pair of electrons. So this is one lone pair and this is one lone pair. So as I told you, when we are calculating the shape of the molecule, we ignore the lone pair. So just cover this lone pair. You will be able to see this shape as angular shape again. So again, it is called either angular or bent or V shape. Got it, madam? Okay. So ये 2 2 का example हुआ and now comes very important 2 3 वाला example. 2 3 मतलब 2 sigma and 3 lone pair of electrons. Now this is very interesting. Check. XeF2. Okay. This is important. Just 1 minute. I have to open the door. So now XeF2. XeF2 में ना 2 sigma and 3 lone pairs are there. The Modi number will be 5. So the geometry will be trigonal planar. So if you carefully check this, see it is looking somewhat like this. इसका अगर आप diagram देखो तो ऐसा रहता है देखो. This is XeF2 and there will be 3 lone pair of electrons like this. तो ये देखो ये शेप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत important है which says that see this will be the shape. Can you see this trigonal bipyramidal geometry? Okay, so these two red color are the bonds and these three black color atoms they represent the lone pair of electrons. So as I told you during the shape of the molecule, do you know that we ignore the lone pair of electrons? है ना? So if you ignore this lone pair, what shape can you see? Can you see a straight line? Okay, so it will be a linear shape. Okay, when you have 2 sigma 3 lone pair, it is linear shape. It is linear shape. Okay, now something again very important that I want to teach you.
it is a trigonal bipyramidal geometry. So I would say that these two are axial bonds and these three are the equatorial bonds. So as I told you earlier also in our last lecture, in a trigonal bipyramidal geometry, you have axial bonds and equatorial bonds. And you know that the axial bonds are greater than equatorial bonds because of that. Remember bond pair repulsion and all. Now यहाँ पे Benz rule लगेगा. Benz rule says that in a TBP geometry, when you have lone pair of electrons, the lone pair is always kept on equatorial position, and the more electronegative atom is kept on a axial position. So this is what you need to know. So lone pair are always kept on equatorial position, whereas the bond pair or the more electronegative atom is kept on a actual position. So I will write it down over here, Benz rule, very important rule. So Benz rule says that uh, lone pair of electrons should be on equatorial position, whereas more electronegative atom, more electronegative atom should be at axial position. And why this is to be done? In order to avoid minimum repulsion and to have maximum stability. Because if the lone pair of electrons are on axial position, see, I will explain you in short. Right now, what is the angle between lone pair over here? Can you see this? If I just turn this, what is the angle between this lone pair and this lone pair? It is 120 degree, okay? 120 degree. So, and do you know this from valence shell electron pair repulsion theory that lone pair has maximum repulsion? Okay. So lone pair which has maximum repulsion over here, they are at an angle of 120 degree to each other and they are at equatorial position. Now what if I change the position? If I swap one of the positions of axial with equatorial. Now look at this. What is the angle between this lone pair of electron and this lone pair of electron? How much is the angle? What shape it forms? See, I guess you are on mute. It's 90 degree. Fantastic. It is 90 degree, correct? So can I say that 90 degree will have more repulsion than 120, which was earlier? Hmm. So if you have such kind of a system, this will make the molecule highly unstable. So that is the reason why we say that lone pair of electrons in a TBP geometry, that is trigonal bipyramidal geometry, has to be kept on equatorial position. Got it? समझा ये आपको पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेंस रूल. What is Benz rule? तो बोलने का सर, Benz rule states that lone pair should be kept on equatorial position and more electronegative atoms should be kept on axial position. Understood, madam? Yes, sir. Okay, okay. If I give you one more example, इसका मैं आपको है ना और एक example देता हूँ. Okay, give you one more example, and that example over here will be of I3 minus. Okay, I3 minus. तो I3 माइनस में भी है ना ऐसे ही होगा. It will have 2 sigma and 3 lone pairs. So where should be the lone pair kept? Tell me. Where should be the lone pair kept? 2 sigma 3 lone pair is geometry will be trigonal bipyramidal. Shape will be linear. So where should be the lone pair of electrons kept? Where should be the lone pair kept? इक्वेटोरियल पे रखेंगे, है ना? Okay, sure. So I will write iodine over here. One central iodine. Look at this very carefully. Very simple. One iodine over here. Another iodine over here.
and then there will be three lone pairs. So one lone pair, second lone pair, and third lone pair. समझा ये मैडम? So this is also a linear shape. The shape will be linear, geometry will be trigonal bipyramidal. Got it? तो ये 2-3 वाला एग्जांपल समझा आपको मैडम? Yes, sir. ओके. अब मैं आपको ये 3-0 वाला बताता हूँ. 3-0 वाला BF3 होता है. Very simple, no lone pair of electrons. So the geometry and the shape will be one and the same. That is trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना ये. देखो BF3 अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ही रखा था मैंने अभी BF3. ये रहा, देखो ये रहा BF3 दिख रहा है. दिस इज बोरॉन, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन. The shape and the geometry will be the same because the lone pair of electrons are zero. So it is trigonal planar. Okay. Now the next example that we have to do after BF3. देखो हम लाइन से ही जा रहे हैं. 20, 21, 22, 23 के बाद हमें ये लेना था 30. 30 के बाद अब क्या लेंगे? 31. 31 का एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया. NH3 लेंगे हम, NH3. तो NH3 में 3 सिग्मा एक लोन पेयर है. तो अगर मैं उसका ज्योमेट्री बनाऊं तो ऑब्वियसली उसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो ट्राइगोनल, सॉरी, उसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो रहेगा टेट्राहेड्रल, और उसका जो शेप रहता है वो रहता है ट्राइगोनल पिरामिडल. तो आई विल जस्ट शो यू ट्राइगोनल पिरामिडल ओवर हियर. This one, where is the tetrahedral shape one? ये रहा. So how many lone pairs are there here, madam? How many lone pairs are there? One, na? Okay. Can you see this? Yes, sir. हाँ. So ignore the lone pair. So there are three bonds. So it looks like a trigonal pyramidal. It is called trigonal pyramidal. And because of lone pair bond pair repulsion, इसका जो bond angle होता है वो 107 degrees and 18 minutes होता है. सिमिलरली जो हमने ऊपर SO2 किया ना, जहाँ पे ये रहता है ये लोन पेयर, तो इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स होता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली 120 बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. समझा ये आपको? ओके. आफ्टर NH3 हमें करना था 3-2 वाला एग्जांपल. तो दैट वाज ClF3. तो ClF3, तो ये आप ऐसा बना सकते हो. ClF3 will be again trigonal bipyramidal geometry, again Bend's rule. So there are two lone pair of electrons. So obviously the two lone pair of electrons have to be kept at equatorial position, and then the three fluorines. Got it? And this is called T shape. तो अगर मैं आपको T shape बता दूं यहाँ पे, देखो वो कैसा होगा. ओके, ऐसा रहेगा. Remove one of the lone pair and put sorry, put one bottom. Can you see this? Exactly ऐसा रहेगा. देखो, this is fluorine, this is bottom fluorine, and this is the side वाला fluorine. Can you see it properly, madam? Yes. Yes, sir. And what are these two black color atoms? Can you tell me? Lone pairs. Fantastic. Lone pairs are there.
This will be lone pair. Okay. So, so, so the angle over here is 90 degree, and just to avoid more repulsion, the bond angle is slightly less than 90 degree. Okay, so this is called bent T shape. Did you see this T shape? Because while calculating the shape, you ignore lone pair. तो थोड़ा सा घुमा दो. ये दिख रहा है आपको? देखो, ये ऐसा टी शेप दिख रहा है ये. ओके, सो इट इज कॉल्ड बेंट टी शेप बिकॉज एग्जैक्ट वो 90 डिग्री नहीं होता है एंगल, थोड़ा सा कम होता है. समझाइए. Yes, sir. तो जीरो वाले सारे एग्जांपल्स हो गए. अब कौन सा एग्जांपल करना है अपने को? 4-0. Hmm. 4-0 में you can take methane where you do not have any lone pair. So very simple, very simple. It will be a tetrahedral geometry. तो जो मैं कब से बता रहा था वही रहेगा यहाँ पे. देखो जरा. One minute. ये ऐसा है. ठीक है. So where is this tetrahedral geometry? I will show you over here. Just 1 minute. पता नहीं बार बार घूम हो जाता है. कहाँ गया? ये. See, this is tetrahedral. No lone pair. So the geometry and the shape will be the same. That is tetrahedral. Okay. Then 4-1 वाला एग्जाम्पल करना है. SF4. तो SF4 में ऐसा रहेगा. There will be one lone pair. Like this. And 4 bond pair. Again here there will be Bend's rule. So the lone pair will be on equatorial position. If I can show you this. So here two fluorine atoms will be there. See, this is first fluorine. And this will be the second. Just keep check. It is exactly like this. तो अगर मैं रोटेट करके बताऊँ आपको, इग्नोर द लोन पेयर. कैन यू सी दिस सीसॉ शेप? दिस इज लाइक अ सीसॉ. दिस इज लाइक अ सीसॉ. गॉट इट? Hmm. मैडम आपको समझ रहा है ना ये सब? Yes, sir. पक्का? Hmm. किसी भी यस यस कर रहे हो आप? Hmm. आर यू श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग मैडम? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट. आस्क मी एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी. ओके, चल. तो ये हो गया SF4. दिस इज कॉल्ड सीसॉ शेप. दिस इज द सीसॉ शेप. ओके, एंड अब 4-2 वाला भी बताना है मुझे. So HCF4. So it looks somewhat like this. See, there will be 4 fluorines over here. And then there will be 2 lone pairs. First and second. तो ये मुझे ऑक्टाहेड्रल में बताना पड़ेगा. 2 लोन पेयर लगा देगा. ऐसा देखो. फर्स्ट फ्लोरीन, second fluorine, third fluorine, fourth fluorine. This is like above the plane and this is below the plane. You have orange color वाला as lone pair. तो अगर लोन पेयर को निकाल दो, बिकॉज शेप के लिए लोन पेयर को निकाल देंगे. इफ यू जॉइन ऑल ऑफ द वाइट एटम्स यू विल गेट स्क्वायर प्लेनर शेप. समझाइए.
तो 40 वाले भी हो गए, 41 42 भी हो गया। अब क्या करने का है? 50। तो 50 का एग्जाम्पल क्या था? पीसीएल फाइव ले लो। इफ यू डोंट हैव एनी लोन पेयर, then the geometry and shape will be the same. Okay, something like this. ये देखो, इसी को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम बोलेंगे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बोलेंगे इसे। फिर आगे चलते हैं। So all the atoms will be same. I will remove the lone pairs. The no lone pairs are there. All black color atoms are fluorine atoms. Got it? Can you see this? This is two bonds are axial and the three are equatorial. Got it? Yes, sir. Okay. Okay. Yes. So this was 50 का एग्जाम्पल। अब कौन सा एग्जाम्पल करना है बताओ। चलो 50 के बाद क्या था? 5 1. 5 51, सॉरी, माई Yeah. मिस्टेक, 51। हाँ, तो BRF 5, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो क्या शेप बोला है बताओ। Square pyramidal. यस मैडम। Square pyramidal. BR लाइक दिस, 1 लोन पेयर विल बी हियर, और एक फ्लोरिंग नीचे रहेगा ऐसा। ये रहा देखो। तो इसमें इसमें अभी एक ही लोन पेयर है ऐसा। देखो ऐसा दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर और ये पिरामिड, ऊपर वाला लोन पेयर है। फर्स्ट फ्लोरिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोरिंग। गॉट इट मैडम? Yes, sir. अभी बताओ क्या करने का है, कौन सा एग्जाम्पल आफ्टर 51 5 2. 52? यस। तो 52 का एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? XC F5. F5। ओके। तो 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। ओके। तो लोन पेयर को हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे देखो ऐसा, XC फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे भी बेंच रूल लगता है। यहाँ पे लोन पेयर को एक्चुअल पे रखेंगे टू अवॉइड मोर रिपल्शन। ओके। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कहाँ पे रखा था लोन पेयर को? इक्विटोरियल पे रखा। बट यहाँ पे एक्चुअल पे रखेंगे सो दैट देर इज लेस रिपल्शन। क्या? हाँ वे, खाली यानी लाइट खुद दीजिए। ओके ऐसा, 2 लोन पेयर। समझा मैडम? अब किसका एग्जाम्पल करने का है बताओ। 6 0 octal region SF6. हाँ, इसका तो क्या था? TBP ज्योमेट्री और शेप भी TBP। DRF5 का क्या बोला था? स्क्वायर पिरामिडल। और इसका क्या बोला था? पेंटागोनल प्लेनर बोला था इसको, याद है? पेंटागोनल प्लेनर। बिकॉज इफ यू जॉइन दिस यू विल गेट पेंटागन। ज्वाइन दिस यू विल गेट पेंटागन ऐसा। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो।
ये देखो पेंटागन दिख रहा है क्या आपको ऐसा? बिकॉज यू डोंट कंसिडर लोन पेयर ना। हम्म, अभी 6-0 करने का है। 6-0 का एग्जाम्पल बताओ चलो। SF6। हाँ तो नो लोन पेयर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, ऑक्टाहेड विल बी द ज्योमेट्री ऐसा। तो अगर आप ये वाला देख, इसमें ये दो लोन पेयर भी निकाल दो ऐसे। लोन पेयर को निकाल दो, ठीक है। लोन पेयर को निकाल दो और यहाँ पे क्या रहेगा? ऐसा। दिख रहा है आपको सारे एटम्स क्लोरीन वाले हैं और सेंटर में सल्फर है। नो, नो रिपल्शन मोर, मतलब नो मोर एक्स्ट्रा रिपल्शन। तो octahedral geometry and the shape is also octahedral because there are zero lone pair. मैंने बोला था ना जब जीरो लोन पेयर होता है तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दे आर वन एंड द सेम. Sorry, 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 sorry. When the lone pairs are zero, geometry and shape are one and the same. Okay. अभी 6-1 का एग्जांपल बताओ. XCF6. तो 6 लोन पेयर, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर. हम्म, और हमने यहाँ पे क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा ऐसा. तो एक क्लोरीन थोड़ा सा हटके रहेगा ऐसा. तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. समझाइए. लास्ट वाला एग्जांपल बताओ. लास्ट वाला क्या था? IF7 था ना, IF7. हम्म, इसमें लोन पेयर जीरो होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर. पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री और शेप भी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, वन अबव एंड वन बिलो ऐसा. हम्म। पेंटागोनल बाई पिरामिडल. What is the golden statement that you need to know? If lone pair is zero, then what? The geometry and shape, they are one and the same. You agree with me on this, madam? Yes, sir. है ना. अगर लोन पेयर कहीं पे जीरो आ रहा है तो बोलने का सर शेप और ज्योमेट्री सेम होता है. तो आप ज्योमेट्री पूछो या शेप पूछो, सेम आंसर ही आएगा दोनों का. ठीक है. तो यू हैव टू राइट फ्रॉम 2-0 वाला केस ना. सो आई विल शो यू दैट पार्ट ना. ये वाला, ये वाला यहाँ से लिख दो सर. ओके, एंड लेट मी नो वंस इट इज डन.
So, can you scroll down? Yes, 1 minute. Now, it's okay. Hmm. Done, sir. Okay, okay. So I will show you the right side part also. Write down this also. Done, sir. Okay. So this was regarding all the shapes of the molecule. Remember this, the geometry and shape, they are two different things. When we calculate geometry, which we did in hybridization, we consider the lone pair of electrons. But when we calculate the shape of the molecule, we ignore the lone pair of electrons. And when the lone pair are zero, the geometry and the shape is one and the same. समझा ये? और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि geometry is sometimes also called structure in certain books. So the geometry and structure means one and the same. Shape is altogether different thing. If I ask you a structure, that means I'm asking you geometry. If I'm asking you geometry, it means that I'm asking you structure. But if I'm asking you shape, it may or may not be equal to the geometry. It will be equal to geometry if the lone pair is zero. But if the lone pair is not zero, then the shape and geometry will be different. Got it, madam? Okay. Now I'm just closing this session. Just join after 2 minutes. We'll start with the dipole moment. This topic is over. Valence shell electron pair repulsion theory. It tells us that the lone pair of electrons, they decide the geometry. Then the valence shell electrons, more precisely, they decide the geometry of the molecule.
they arrange themselves in such a way that there is minimum repulsion, maximum stability. The double bond, triple bonds, they are considered as single super pair, and the maximum repulsion is between lone pair, followed by lone pair, followed by bond pair, bond pair. Got it? And we saw that the bond angle changes because of lone pair repulsion. Just like in ammonia, instead of 109, it is 107 because there is one lone pair. In water molecule, the bond angle further decreases to 105, 104 degree and 5 minutes, or approximately 105 degrees bola to bhi chalega. Okay. Because in water there are two lone pair of electrons. Because there are two lone pair of electrons. Got it? Okay, so just join after 2 minutes when start with the dipole moment. ठीक है Okay. मैडम?